नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 27 और 28 सितंबर को एक बार फिर वैश्विक मंच पर खुशियों का संदेश मिलने जा रहा है। होटल क्लार्क्स आमेर में ग्लोबल हैप्पीनेस फोरम जयपुर द्वारा होने वाला ये प्रोग्राम इस बार और भी भव्य होने वाला है। इसका मुख्य विषय और थीम है गेटवे टू ग्लोबल हैप्पीनेस, जिसका उद्देश्य जीवन के हर क्षेत्र में खुशी और कल्याण को केंद्र में लाना है। इस इवेंट के आयोजक वर्ल्ड हैप्पीनेस फाउंडेशन इंडिया चैप्टर और एसटी फाउंडेशन कर रहे हैं, जिसमें कोकता फाउंडेशन और जेनिस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड भी सहयोगी हैं। ये 2 दिवसीय आयोजन भारत और विदेशों से आए 600 से अधिक प्रतिभागियों और 20 से अधिक विशिष्ट वक्ताओं, विचारकों और वेलनेस विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। कार्यक्रम के आयोजक विक्रम रस्तोगी ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य है कि जीवन के हर पहलू, व्यक्तिगत, व्यावसायिक और संस्थागत में खुशी को केंद्र में स्थापित करना, खुशी के विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समग्र कल्याण को बढ़ावा देना और सतत आनंद के लिए एक वैश्विक आंदोलन को प्रेरित करना। 27 सितंबर को सुबह 10 बजे उद्घाटन सत्र आयोजित होगा, जिसमें डॉक्टर सुधीर भंडारी, प्रोफेसर एंड चांसलर जेएनयू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुख्य अतिथि होंगे और मेजर जनरल अनुज माथुर अध्यक्षता करेंगे। 28 सितंबर को दोपहर 3 बजे समापन सत्र होगा, जिसमें माननीय राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह आईएएस सेवानिवृत्त मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न थीमेटिक ट्रैक होंगे, जैसे आध्यात्मिक कल्याण, शारीरिक एवं बौद्धिक स्वास्थ्य, भावनात्मक कल्याण, शिक्षा में खुशी और कार्यस्थल एवं समाज में खुशी का भविष्य। इस आयोजन में कई वैश्विक वक्ता भी शामिल हैं। इस अवसर पर 5 प्रभावशाली पुस्तकों का विमोचन भी होगा, जिसमें एक्शंस फॉर हैप्पीनेस इन एकेडमिक्स, द बॉइलिंग फ्रॉग, इसके साथ ही हाउ टू बी ऑन अ डाइट फॉर 45 इयर्स एंड नेवर बी थिन प्रमुख हैं। इसके अलावा एक विशेष बुक्स कॉर्नर भी होगा, जहां 10 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकों का प्रदर्शन और बिक्री की जाएगी। आयोजन में हैप्पीनेस सॉन्ग्स की स्क्रीनिंग और युवाओं द्वारा संचालित वॉलंटियर लीडरशिप पहल भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस और मेंटल वेलनेस ये ज़रूरी है। किसी के लिए हैप्पीनेस जो है स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा आएगी, किसी के लिए फिजिकल से आएगी। आप गेम्स खेलते हैं, यू फील चेयरफुल। आप उठ के व्यायाम करते हैं, आप उठ के भगवान का नाम लेते हैं तो यू फील हैप्पी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो इसके 4-5 पिलर्स हैं, उनमें हमें ध्यान देना चाहिए एंड वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट ए वे जो कि ऑप्टिमम वे हो। वो वे हर एक के लिए अलग अलग होगा और वो हर एक को अपना अपना ढूंढना पड़ेगा। कोई आदमी जो है स्पिरिचुअल पे ज़्यादा रहेगा तो फिजिकल कम रहेगा, एजुकेशन में कम रहेगा, कुछ मेंटल पे करेगा। तो इट इज़ ए लाइफ जो स्पिरिचुअलिटी है, ये हैप्पीनेस, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3, 4, 5, 6 फैक्टर्स। वो हर एक के लिए अलग अलग होगा और हमने को अपने आप ही ढूंढना पड़ेगा और अगर हम करेंगे तो उससे हमें हैप्पीनेस मिलेगी। आज जब पूरी दुनिया में तनाव, थकान और भावनात्मक दूरी बढ़ रही है, तब GHFJ 2025 एक ऐसा कार्यक्रम है जहां ये समझा जा सकता है कि खुशी विज्ञान भी है और अभ्यास भी, और शायद हमारे समय का सबसे अहम निवेश। इसी की एक छोटी झलक आज भी देखने को मिली, जहां कुछ शोधकर्ताओं ने अपने विचार हमारे साथ शेयर किए, जिसमें लोकमत राजस्थान की टीम से खास बातचीत की और शोधकर्ताओं ने अपने खूबसूरत विचार साझा किए। राजस्थान की राजधानी जयपुर आज एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक कार्यक्रम की साक्षी बनने जा रही है। यहाँ पे अशोक क्लब में ग्लोबल हैप्पीनेस फोरम जयपुर के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। तो वहाँ के जो विजिटर्स हैं, जो चीफ गेस्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या इस 2 दिन के कार्यक्रम में विशेष रहेगा और क्या कुछ इसकी खास बातें रहेंगी। जी सर, क्या कुछ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें खास रहा और क्या कुछ 2 दिनों में जो आने वाली है उसमें खास रहेगा? So the conference is about happiness, and we know that happiness and bliss is our real nature, but we see also the statistics in India and abroad that 70 to 80% people are very unhappy, they are very stressed. So I have been a medical doctor for 25 plus years. I have patients coming to me with physical health problems, with mental health problems. So we want to see what is stealing this happiness. लोग इतने नाखुश क्यों हैं अपने जीवन में? So what is the thief of this happiness?
So the thief of the happiness is chronic stress. People who are having a lot of hidden stress in their lives, which they are not able to be aware of, and then they realize that suddenly they are feeling tired all the time, or depressed mood, or they are having feeling what is the purpose of life. They are having relationship issues. So from the medical point of view, I am coming and I'm talking about how the stress affects our brain. See, the brain has got right part of the brain, the left part of the brain, and the lower brain. How the stress is affecting our brain and stealing away our real nature, which is of happiness. And we have got excellent speakers who will tell you that happiness is the real nature. It's great to know that. That is the art of happiness. But as a medical doctor, I'm going to share with you the science. So together we will make this a great event, and we will give the listeners a lot of framework, a lot of ideas that they can lead a very fulfilling life. Now there are two limbs of life: the art of fulfillment and the science of achievement. We are going to share about the art of fulfillment and leading happy life. What do you think what happiness is, and what global Indian global form of happiness want to give a message for it? Happiness is the experience of whole person well-being. With that concept, then we can look at how we can increase our happiness. There's the science to study about how we can increase happiness. And the key word here is happier, right? Yeah. Happiness is not you climb the mountain to the top, then you are happy, right? It's happier. Everybody can become happier. And my focus is in the workplace well-being. So how can we apply the science of happiness, all these applications, into workplace to help organizations create an environment and a culture that people come to work, they are happy, and they can be more productive, they fulfill their potential, and of course, at the end, the organization will do well. So that's what I'm doing in my PhD program, really focusing on workplace well-being. Thank you. Okay, sir. So what do you think about happiness? What is happiness according to you? Well, happiness, the first and foremost, I like to think in terms of happiness is definitely not the destination. Just like Michelle just said, it's the journey. And being happier every day is the goal. And the primary thing that we like to help everybody else understand is really that success does not lead to happiness. Happiness leads to success. आपका क्या मैसेज रहेगा आज की कॉन्फ्रेंस के लिए और आने वाला जो 2 इवेंट होंगे जी, उनमें कैसे जी। ये जो फर्म है हैप्पीनेस Yeah, कैसे yeah, ये yeah. हमारा काम करेगा? So there is no way to happiness. Happiness is the way. ये पहला मैसेज है मेरा. जहाँ तक आज के ये जो 2 दिन के कार्यक्रम की बात है, ग्लोबल हैप्पीनेस फोरम का जो आयोजन हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस फाउंडेशन के कोलैबोरेशन के साथ, तो उसमें अलग अलग देशों से, अलग अलग भारत के प्रदेशों से स्पीकर्स आए हैं जो अपने अनुभवों, अपने रिसर्च और अपनी प्रैक्टिसेस के आधार पे कुछ ऐसे टूल्स, ऐसी मेथड्स शेयर करेंगे जिसे हर एक इंसान उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करके हैप्पीनेस को अपनी पा सकता है और साथ में इसकी समझ गहरी बनेगी. और एक विशेष बात हम कहना चाहेंगे हैप्पीनेस के संदर्भ में, वो ये है कि अगर हम अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट और इमोशंस को इंटीग्रेट करके ऑपरेट करें दुनिया में या समाज में या परिवार में, तो हम एक ऐसे बैलेंस की स्थिति में आ जाते हैं कि हम खुद भी खुश रहेंगे और अपने आसपास भी खुशी या हैप्पीनेस भी खेलेंगे. तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि इस इतने अच्छे फोरम का आयोजन हुआ है जयपुर में, और आगे फोरम की स्ट्रैटेजी है कि आगे भी इस तरह की इवेंट हों जिससे कि यूथ और कम्युनिटी के और भी लोगों को जोड़ा जा सके और हैप्पीनेस को स्प्रेड किया जा सके. Okay, ma'am. So what do you think about happiness and what message you want to give to our audience that happiness is the For me, happiness, it can mean many things, but I think you can get to happiness through consciousness.
And also happiness, we define it as a bridge to peace, like to inner peace and to world peace. So I think there are two things very important. One of them is breaking paradigms. Like we are born happy and we are born with this essence of love and consciousness. It's just like we are wrapped in all these paradigms, right? So it's like unwrapping and taking off the layers so we can return to our essence. And also the power of connection. Relationships are the ones that make us happier, but we have been very disconnected. Right? We are more connected technologically, but we have disconnected from ourselves, from others, and also from nature. So I think if we regain all those connections, we get easier to happiness. Thank you. Thank you. Okay, ma'am. So, what do you think about happiness, and how can youth can be happy, especially the teenagers? Okay. So for me, happiness is really freedom. Is the freedom to be who you are, and to live your life and to love what you have. And I wrote this book, How to Be on a Diet, for 45 years and never be thin, because I always believed that what stood between me and happiness was 10 kilos, and I thought when I lose them, then I'll be happy, finally. And I realized that everybody has their own version of that notion, that we're all waiting for something external in order to become happier. So happiness is nowhere to be found exterior. It's only inside of us. It's in our freedom to be who we are. And speaking about community also, and I'm going to talk about it in the conference, is about the importance of community and to be with people that support you and that and that are your the tribe behind you. So these are two things that for me are happiness. Well, something very important as the World Happiness Foundation, we are working in Rajasthan with artisans. So we are actually combining the work of how to have dignity and how to have joy and happiness. So something that we know when we work with the artisans is that they are already happy, but they are lacking the perception of happiness because they compare with other parts of the society and they feel excluded. So I think that the concept of happiness in society is critical. We consider happiness a human right. So I think it's very important that we create the awareness, the necessary awareness, to see happiness as a right. And when we work with the artisans and we can reach dignity with happiness, we see that it's possible at any level of society to achieve higher levels of happiness if we focus on working on it. And this is what we do. We bring techniques, we bring tools for all these artisans and the rest of youth, of course, to create self-awareness and self-management of your emotions and the way you build your mindset. तो ये थी आज के सभी लोगों की सोच। सबने हैप्पीनेस को लेकर बहुत अच्छी बातें कही हैं। सबने सिखाया कि खुश रहना हमारी खुद की मन की इच्छा है, हमें खुशी ढूंढनी पड़ती है। इसी के साथ मैं पीहू कैमरामैन विक्रम सिंह राठौड़ के साथ अभी से आप सभी से विदा लेती हूँ। आपसे जल्द मुलाकात होगी ऐसी और बेहद खूबसूरत खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ये आयोजन न केवल लोगों को प्रेरणा देगा बल्कि एक वैश्विक रूप से लोगों को खुश रहने की दिशा भी प्रदान करेगा। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।